Thank you for clicking this channel. So, Standard 9th Algebra, Chapter 1 Set, Practice Set 1.4. So students, before we start this practice set, let's go through some explanation which will be regarding this practice set. Now, first one, as it is written over here, operation on sets. So, sets के ऊपर कुछ operation. In mathematics, operation means what? When you were in like up to 8th standard, operations are plus, minus, subtraction, division. But here, operation on sets. First one is intersection of two set. Now, you all have learned intersection means when two lines intersect each other, this common point is said to be intersection. Okay, but here we are learning about set. Set क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या वर्ड. ओके, सो अगर ये दो ग्रुप में से कुछ भी कॉमन निकला, सो दैट इज सेट टू बी अ सेट. सो here for example you have set A which has element 1 3 5 7, and here you have set B which has elements 2 3 6 and 8. So in both this element, if you see, you will get 3. This 3 as common. ये 3 आपको दोनों में मिलेगा. So that means A intersection B. A intersection B is 3. जब A और B एक दूसरे से कट होते या इंटरसेक्ट होते टकराते तो उनका कॉमन इंटरसेक्शन होता है 3. So here 3 is a, see this is Venn diagram. Okay, this is rule method form, listing method form, and this is Venn diagram. Venn diagram ने हमने set A के सारे elements लिखे 1 5 7 and 3 we have written here. Why? Because this 3 is there as well in set B. So 2 6 8 and 3. So ये intersection हुआ. And how to write that A intersection B की A और B का जब intersection होगा, so it is a set of X, यानी these elements where X belongs to A and X also belongs to B, यानी ये जो 3 है वो A का भी है and as well as it is of set B. Now another point, disjoint set. Now what is disjoint set? Here see, this was joint kind of intersection because there was a common element. But in disjoint set you will not get a single common element. जब कोई भी common element नहीं होता, so that is said to be disjoint set. That means they are not intersecting with each other. Here set A has 1 3 5 9, set B has 2 4 8. There is not a single numerals which are in common. तो दोनों का अलग अलग Venn diagram बनेगा. These sets are completely different from each other. Now further is union of two sets. Now word union means मिलजुल के रहना. Okay, so for example set A में कुछ elements है और set B में कुछ elements है और इनमें से अगर कोई common है तो union, इनका union कैसे बनेगा? Now here set A has 1 2 3 4 5 and here B has 4 5 6 7. So this 4 5 is common on both these sets, so that we will write here 4 and 5. So here what left? 1 2 and 3. Also here left 6 and 7. So ये यहाँ पे एक्चुअली देखने पर ये बन जा रहा है इंटरसेक्शन. ओके, सो येस इट इज़ इंटरसेक्शन दैट 4 and 5 इज़ कॉमन ऑन बोथ दिस साइड. नाउ बोथ दिस सेट. नाउ व्हेन वी राइट देम इन यूनियन फॉर्म, सी इंटरसेक्शन के वक्त वी शो सिंबल ऑफ एन. ये एन की तरह होता है कि दोनों जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कट होते हैं तो ये सिंबल यूज़ होना है. एंड फॉर यूनियन
here U shape is there, umbrella kind of U, that A union B, यानी set A and B when they join their hands, जब वो लोग हाथ मिलाते तो इन दोनों का एलिमेंट्स क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 and 7, दोनों का मिला के 1 2 3 4 5, 4 and 5 वी विल नॉट टेक ट्वाइस, हम दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी लोग हाथ मिला रहे ना, तो वो एक ही बार कॉमन में आ गया 4 and 5. So here we will write A union B is a set of X where X belongs to A as well as or X belongs to B. Okay, now fourth point is number of elements in a set. Now the practice set which you are going to solve now is based on this formula. So let's understand how this formula comes. Now see, number of element in a set, यानी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है. फॉर एग्जांपल यहाँ एक सेट ए है, it has 3 6 9 12 15 tables of 3, so 1 2 3 4 5, so number of A is 5, elements in set A is 5. Now B, it has 2 4 6 8, तो हमको ये नंबर नहीं दिखना है, we have to count 1 2 3 4 5 6 7, so number of element in set B is 7. Now when you see A intersection B, यानी A और B जब हैंड शेक करते हैं तो intersection means what are the common, 6 and 6 12 and 12, so 6 and 12, so number of A intersection B that is 2, दो एलिमेंट्स मिले कॉमन, सो दैट वी रोट. इंटरसेक्शन देखो यू अम्ब्रेला की तरह एन शेप में आएगा. ओके, और ये नंबर. नाउ इन यूनियन ए यूनियन बी, ए और बी जब हाथ मिलाएंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएगा. सो दोनों में से सारे नंबर लिखेंगे, ओनली द नंबर विच इज़ getting repeated 6 and 12 that we will write only once. इनको 2 टाइम नहीं लिखेंगे. so 2 3 4 6 वापस 6 हो गया, तो 8 9 10 12 14 15, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so there is 10 elements, number of A union B. Now see, this is a formula which you have to use. ये फॉर्मूला के बेस पे ही अभी हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 1.4. व्हाट दे आर सेइंग, ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये और ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, व्हेन वी विल ऐड देम, सो दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. सी यहाँ पे 10 और 2 मिला था, सो 10 प्लस 2 12 and 7 plus 5 is also 12, so that means when we add these two that is equals to this two. Now इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर मिसिंग है and we have to find out, for example A intersection बी नहीं है, ए यूनियन बी इज़ नॉट देयर, सो ये जो है वो हम यहाँ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. सेम इफ़ वी हैव दिस बट वी डू नॉट हैव यूनियन, सो वी विल ब्रिंग इट हियर एंड इट विल बिकम माइनस. सेम इसमें से भी हो जाएगा कि हमारे पास ये नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें, तो हम ये यहाँ पे लेके आएंगे माइनस होने के लिए. सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस वन फॉर्मूला we can find out any missing numbers out of this. So let's see our practice set. Now first question, if number of A is 15, A union B is 29, number of A intersection B is 7, and then find out number of B. So first we will see the formula that number of A union B is equals to how much, ये number of A plus number of B minus number of A intersection B. Okay, this was the formula that we learned just now, अभी हमने देखा था. So what we will do, हम देखेंगे what all we have. Now A union B we have 29.
Then here we have 15. Here we do not have, ये नहीं है हमारे पास. Then A intersection B we have 7. So now what we will do, इसको as it is रखेंगे. देखो, now this 15 and this minus 7. So 15 minus 7 is how much? 8. Correct. 15 में से 7 गया, 8 बचा. And here 29. Now we have to find out this. So ये जो 8 है उसको यहाँ पे लेके आएंगे. So here it is in positive form. When it will come here, it will be in negative form. So number of B. So 29 minus 8 is 21. So therefore number of B is equals to 21. So I hope you all have understood that number of B is equals to 21. Simply we use the formula, and with the help of formula we got the answer. Now next question. In a school hostel there are 125 students. Okay, एक स्कूल में, for example आपके क्लास में there are 125 students, out of which 80 drink tea. 80 students tea पीते हैं. Then 60 drink coffee, 60 drink coffee, and 20 drink both tea and coffee. So 80 बच्चे चाय पीते हैं, 60 बच्चे कॉफ़ी और 20 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं. So find the number of students who do not take tea or coffee. So ऐसे student कौन है जो ना तो टी पीते हैं ना तो coffee. So first of all let's see, I have already written to save time. Yeah, let U means universal, इसमें से जो main होगा, U be the total number of students in hostel. So that is 125. So number of U is 125. Then let T be the set of students who drink tea. So number of T is how much? 80. Same C, coffee. So number of C is 60. And here 20 students who drink both. So both पीना यानी intersection हुआ ना. ऐसे इंटरसेक्शन हुआ कि हाँ भाई हम चाय भी पीते कॉफ़ी भी पीते. सो नंबर ऑफ टी एंड सी इंटरसेक्शन इज 20. सो now we will use that formula and we will find out first. See, here we do not have union, so number of T union C means coffee and tea. Okay, so what will be the formula? Number of T plus number of C minus number of T intersection C. So T we have 80 plus C we have 60 and here we have 20. Right? Correct? So now 80 plus 60 is 140, then minus 20. So that is equals to 120. Sorry. I hope it is visible now. Sorry. Okay. So now see, this was the sums 80, 60 and 20. So 80 plus 60, 140. Then subtracting this 20 and 120. So here we got that tea union chai union coffee. Tea union coffee is 120. And what we have to find out, how many students do not drink both. So the number of student who do not drink both tea and coffee will be, see, we know number of total student 125, correct. And now we got number of T union C, यानी जो दोनों पीते हैं. Okay, so obviously how we will get the answer?
दैट 125 ये टोटल स्टूडेंट है, उसमें से यूनियन वाले बच्चे जो पीते हैं दोनों, सो वी विल गेट 5. So that means 5 students do not drink either tea or coffee. Okay, I hope you all have understood the sums clearly. ये टोटल बच्चे थे और ये वो बच्चे थे जो एटलीस्ट कोई एक तो पीते ही थे और साथ में कॉमन बच्चे जो दोनों पीते थे, सो वो माइनस करके वी गॉट 5. So third question, in a competitive exams 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subject. ओके, सो 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए और 60 मैथमेटिक्स में और 40 ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों में पास हुए, यानी ये इंटरसेक्शन वाला हुआ. ओके, सो नाउ नन ऑफ देम फेल, कोई भी फेल नहीं हुआ इन बोथ द सब्जेक्ट. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट. सो ऐसे नंबर को ढूंढना है जो एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं. Okay, so A union B, like in short, total number of student in short. So here to save the time, I have already written the things. See, E, let E be the set of student who passed in English. English है तो E दे दिया. कितने थे? number of 50. Same maths के लिए M and number of M is 60. एंड देन 40 स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों में पास हुए, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, इंग्लिश और इंटरसेक्शन मैथ्स 40. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन कि ऑल टुगेदर टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड. सो फॉर्मूला वाज व्हाट, दैट नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ मैथ्स एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ E intersection M. So see, this is the easiest answer. Sums 50 plus 60 and then minus this 40. So 50 plus 60 is how much? 110 minus 40, that is equals to 70. Okay, so therefore number of E union M is 70. So therefore 70 students who pass at least in one of the subject. I hope you all have understood the sums. Okay, question number 4. Now seeing question number 4, you might be thinking it is so difficult. Okay, question देख के लग रहा होगा बहुत difficult है. Let's see. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of a class. So this is what union. Okay, I have already written something to save the time. So we will go together, दोनों साथ में question read करते करते ये भी. So this 220 is what? Union. So let U be the set of all surveyed student of standard 9, number of U 220. Then student of class 9th. Now out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing. 130 student rock climbing करते and 180 student informed about their hobby as sky watching. Okay, sky watching. So here we will give names to different. R for rock climbing. So number of R is 130. B, you can give any alphabet of your choice. Now sky watching, so you can write S as well. I have written B. So number of sky watching student is 180. And then there are 110 students who follow both the hobbies. So both the hobbies यानी intersection हुआ. So 110 students like both rock climbing and sky watching, that is intersection. Number of R intersecting B, that is 110. Now what is the further question? Then how many students do not have any of the two hobbies? कितने बच्चों को, ये देखो हमने सेकेंड सम्स किया था ना, वैसा हो गया. Then this question, how many of them follow the hobby of rock climbing only?
So only rock climbing. And how many students follow the hobby of sky watching only? Okay, so let's go. Now, according to our formula, number of R union B. Okay, so this is the formula. So here, number of R we have 130. Number of B we have 180. Minus intersection we have 110. So this is equals to 210, 100, 310 and minus 110. So 310 minus 110 is equals to 200. So therefore number of R union B is 200. Okay, now the first question, number of students who do not follow the hobby of rock climbing are rock climbing. First question अभी solve कर रहे. So पूरा union total number of student minus this R union B. So total number of student minus तो देखो ये क्या था, यूनियन मतलब जिनको पसंद है, और वी हैव टू फाइंड आउट दोज हु डू नॉट लाइक. सो ऑब्वियसली पूरे टोटल में से दोज हु लाइक उनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हु विल रिमेंबर, को कौन बच जाएगा, जो वो बच्चे बच जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं पसंद. सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग. So see rock climbing. So total number of rock climbing minus rock climbing intersection B. So that is 130 minus 110, that will be equals to 20. And then third question, number of students who follow the hobby of sky walking only. So that is 180 minus 110. So that will be equals to 70. So here we have got answers of all three questions that have been asked. Okay. I hope you all have understood. Now the fifth question, observe the given Venn diagram and write the following sets. Means they have asked ये फिगर को ऑब्जर्व करो, वेन डायग्राम को, और ये कुछ आंसर्स बताओ. नाउ दे वांट ए. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ए. दिस इज योर सेट ए. सो ए में क्या क्या एलिमेंट है. सो दे आर एक्स, Y, Z, M, N. Correct? See 1, 2, 3, 4, 5. Then in B will be what? P, Q, R, M, and N. So we will write element of B, P, Q, R, M, and N. ओके. देन ए यूनियन बी, यानी ये दोनों जब हाथ मिला रहे तो सो दोनों में कॉमन इज एम एन. सो दैट मीन्स ये अल्फ़ाबेट पूरा लिख के सिर्फ ये लिखेंगे. सो दैट इज़ एक्स, वाई, जेड, एम, एन, पी, क्यू, आर. ओके. ए यूनियन बी. नाउ यूनिवर्सल यानी पूरे U में. सो दिस इज़ योर वेन डायग्राम U. सो इन दिस U ये A के सेट तो आएंगे, B के सेट मीन्स दिस एलिमेंट विल कम, दिस एज वेल, एंड दिस टू जो सेट के अंदर नहीं है. सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट दिस फुल एंड ऐड दिस S and T. सो X, Y, Z, M, N, P, Q, R, S and T. What we did, हमने ये दो सेट का एलिमेंट जो यहाँ पे यूनियन में लिखा था वो लिख लिया, एंड ये जो एक्स्ट्रा बाहर थे S and T वो लिख लिया. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट.
सो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो ए के एलिमेंट्स है उसको छोड़ के यूनिवर्सल से कंपेयर करेंगे. वी विल लीव ऑल दिस एलिमेंट इन यूनिवर्सल एंड वॉट एवर इज लेफ्ट दैट वी विल राइट. So x, y, z, m, n. So x, y, z, m. This all we will leave. So this we will write here. जो भी एलिमेंट ए का है उसको रिमूव करके जो बचा कुछ एलिमेंट यूनिवर्सल में बचा रहता है दैट वी राइट. सेम वी विल राइट बी कॉम्प्लीमेंट. सो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पी क्यू आर एम एन. सो आंसर्स आएंगे एक्स, वाई, Z, X, Y, Z, S and T. Okay. Now A union B complement. So A union B ये हुआ. So उसको यूनिवर्सल से कंपेयर करके we will write A union B complement. So X, Z, Y, M, N, P, Q, R तो है. So what is left? Only S and T. So this is answer for A union B complement. And here we come to end of our practice set. I hope you all have understood.